वेलकम टू माय चैनल साइंस आइकन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल को। अ, आज हम इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में जानेंगे। इंटेंसिटी ऑफ वेव, द इंटेंसिटी आई इज इफ अ वेव डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एवरेज पावर पी टू द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ energy flow that the energy passes through. Then I equals to P average divided by A. Then I equal to C S max F square divided by A, where C is the constant of proportionality. Intensity of wave उसके उस वेव का एवरेज पावर और एरिया का रेशियो होता है। If a wave is spread out from the source in all directions, it is the three-dimensional wave. Energy spread uniformly in all directions in an isotropic medium. The wave is said to be spherical wave. As the wave moves outward, the energy it carries is it spread over the large and larger area, since the surface area of a sphere of radius r is 4 pi r square. Thus, the curve is spherical wave with a constant power output p. Its intensity of given and अगर हर कोई भी ये वेव सब डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस तरह का वेव को हम स्पेरिकल वेव कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ वेव होता है आई इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। आई होता है प्रोपोर्शनलिटी टू आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज नॉन एज वे If we consider 2 points at distance r1 and r2 from a source, then intensity of first point equals to p 4 pi r1 square, then I2 p divided by 4 pi r2 square. इसलिए रेशियो ऑफ आर I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल्स टू r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel and please share this video.